बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोज़ में हमने जो है वो कंट्रोलर और ट्रेजरर्स के बारे में जाना कि वो क्या आते हैं और किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में उनका क्या कोई रोल होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के जो प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेज फाइनेंस की मैनेजिंग में कहाँ यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, मैनेजरियल फाइनेंस इज़ एसेंशियली अ कम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमी एंड अकाउंटिंग। First, finance managers utilized accounting information, cash flows for planning and distribution of finance resources of the company. उसके बाद secondly, managers use economic principles as a guide for financial decision making that favor the interest of the organization. In other words, finance constitutes an area applied in economics that is supported by accounting information. Since finance reflects what adds value to a company, finance managers constitute important individual for the majority of business. Financial managers measure the development of the company. They determine the financial consequences, the tendencies, and recommend on how to use the assets of the organization for the well-being and survival of the business in the long run. उसके बाद in today's world it is the imperative to have the means and tools needed to be competitive. There must be a vision that there are no borders in order to make a business successful and to guarantee its survival in the long run. Decision making based on different scenarios must be done in order to assure the right use of the assets on the company. Managerial finance is the branch of finance that concern itself with the managerial significance of finance techniques. It is focused on assessment rather than techniques. उसके बाद the difference between a managerial and a technical approach can be seen in the questions one might ask of the annual reports. One concerned with technique would be primary interest in measurement. The objective of financial statements is to provide information about the financial strength, performance, and changes in financial position of an enterprise that is useful to a wide range of users in making economic decisions. उसके बाद managerial finance helps with business decision making as it directly influences profits, losses, cash flow, and revenue generation in the organization. It contributes to a company's overall growth significantly. The four key fundamentals of managerial finance are ये जो है वो फोर फंड अमाउंट ऑफ कैपिटल इवेंट और टाइम व्हेन द कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये जो हमने इधर पढ़ा है इकोनॉमिक प्रिंसिपल के, इसको जो है वो हम गूगल पर भी सर्च करके देखते हैं कि उधर इसके बारे में जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये देखें जी, द प्राइमरी इकोनॉमिक प्रिंसिपल यूज्ड इन मैनेजरियल फाइनेंस इज़ marginal cost benefit analysis. The principle that financial decisions should made and acting taken only when the added benefits exceed the added cost। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसके इमेजेस फॉर्मेट में भी देख लेते हैं कि क्या कोई जो है। ये देखिए जी, द मैनेजरियल फाइनेंस फंक्शन।
The primary economic finance principle used by financial managers is marginal analysis, which says that financial decisions should be implemented only when benefits exceed cost। ठीक है, तो जब बेनिफिट कॉस्ट से बढ़ेगा तो ही जो है वो मैनेजर एनालिसिस में जो है वो इम्प्लीमेंट होगा उसका फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।